Hello everyone. I'm Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's session. As you know, SEO used to bring sessions on different topics, whether these are educational opportunities, career counseling, motivation, health, and much more. Today we have Sir Hassan Tariq, who is an MPhil scholar at Qaid University. Welcome, sir. Uh, he has a lot of research on different aspects such as development economics, international political economy, and geoeconomics. He is also a member of World's Institute of Nuclear Security, which is situated in Vienna and Austria. So, the agenda for today's session is unemployment and nation building. So, it's over to you, sir. You may start. Okay, thank you for inviting me. I'm very thankful to Sindh Education Organization that they have provided me opportunity to discuss about the most persistent topic in contemporary years. So I would, as my colleague has already been told a lot about me. I would just like to guys tell you that my major is in basically in political economy, and I'm currently a doctoral candidate at Istanbul University, Turkey as well. So let's start our session. Okay, okay. So today's topic is employment and nation building. As you guys will be familiar of this topic, as it's considered as they were one of the major stumbling block in Pakistan's nation building. Okay, so first of all, we will discuss about unemployment, and later we will talk about the nation building. So, guys, how do you want that? It should be an interactive session, or it should be a lecture based? How it should be? सर मोस्टली क्यूएस हमारे एंड में होते हैं एंड इफ यू वांट कि ये Okay. इंटरेक्टिव होने चाहिए तो फिर मैं पार्टिसिपेंट्स को अलो करता हूँ कि वो इंटरेक्ट कर लें Okay, so I would like that it should be an interactive session. So it would be a better. It will be better for understanding. Okay. ओके Okay. So पार्टिसिपेंट्स आप अपनी माइक्स अनम्यूट कर सकते हैं इफ यू नीड okay. Okay, first of all, we will talk about unemployment. What is the unemployment? What conditions cause unemployment? We will talk about that. Actually, unemployment by definition states that if someone is interested in doing work, have a minimum capability and that skill set, and he is not able to find any job or relevant services, so it's considered as it's taken as in the terms of unemployment. Okay, because of unemployment, there are many various issues which causes to slow a nation building process. Okay, first of all, we will discuss about income inequality and class divide. Because of unemployment leads to poor growth rate and skilled labor loss in labor market. Okay, and one of the most pressing concern is human capital flight, unemployment and nation building in Pakistan. We will talk about that. And we will also discuss about why nation building is failing in Pakistan. So at the end, we will have some policy inputs, most pertinent policy inputs, and you may ask question answers between the session, and you may ask at the end as well, equally as you guys you like and feel comfortable in understanding the concepts. Okay, so first of all, we will discuss about the income inequality and class divide. Income inequality leads to social discontent among the people, political polarization, and populist nationalism. Okay, so first of all, we will understand each and every term one by one. So first, why it causes social discontent? Because it widens the class divide among the people. When there is an income inequality, their class difference emerges. Some people are more poor and some people are more rich. So this class difference causes unrest among the people and make them to take the violent initiatives. Another aspect of income inequality is that political polarization.
mostly how it is associated to social discontent and populist nationalism. Once actually it starts from income inequality. When people don't have enough opportunities, people don't have enough opportunities. Our political parties motivate people to come up with them and to join them as they are fighting for their economic development. Here it causes a political polarization. People are divided into different groups and categories. Like you can see Pakistan People's Party, Pakistan Muslim League known in Pakistan, and Pakistan Tariq and SAF. Okay, they actually political parties are in democratic system. It depends upon the political participation of people. But once there is an income inequality among people and social discontent among people about their leaders and about their politicians, so political polarization occurs. And in that case, a populist leader emerges, and in populism and the entire politics revolves around that populist nationalism. Okay, it has some drawbacks as well and some benefits as well, but here we will keep it to the populist nationalism, to the rise of populist nationalism, in which people consider that a populist leader as the savior of their country, instead of realizing the fact that institutional framework is more important than the political identity of that person. Okay, so economic polarization leads to the trust deficit in public democratic institutions. Economic polarization widens the gap between people, as already discussed. A new class emerges, and that new class is because of economic differences and economic polarization. Uh, it differentiates between actually in democratic framework states try to maximize, and in the liberal political order state try to maximize the citizens benefit. But once it's economic polarization, the struggling class struggle to go either in the upper class, or either it further deteriorates and rest in the lower class. So here it increases economic polarization and result into the trust deficit in public democratic institution. People feel that our public democratic institutions are not functional as they should be, because they are unable to fulfill the requirements and demands of the people. So their trust deficit results in the economic polarization, and this economic polarization and income inequality results in class divide between the people. Okay, rising here in contemporary years, especially after the Great Depression, economic depression in 2007-8, the rise of income inequalities at global level has been seen, and rise of populism has also been attributed that uh, to that economic crisis. Okay, next component is the poor growth rate and skilled labor loss in labor market. Because of unemployment, as our productivity reduces, low income activity, because markets are not functional, industries are not working, people associated with them are not able to find jobs. So our growth rate decreases, and low income inequality results into the poor growth rate and labor loss. Labor try to find some better places for economic motives, for political motives, for social upheaval, because they are not getting paid well as they should be. So it results in the poor growth rate and skilled labor loss in market. Labor market is that you start losing the skill labor, as Pakistan has seen a capital flight in recent years, and because of that, Pakistan is losing skilled labor. And in coming years, Pakistan will face a severe shortage of skilled labor because competent people are leaving Pakistan because of low income inequalities and low in economic activities. Okay, recently published report also tells about that 806 industries
either have stopped working in Pakistan or moved or switched their businesses to the other countries. So here, low income economic activity results in the poor growth rate and labor loss. That takes decades to fill that gap in the labor market. Okay, low economic activities put pressure on the firm to lay off more employees. As far as it will increase low economic activities, it can be multiplied with many issues like tariff issues, trade restrictions, and poor governance system, political disturbance, and social disturbance. So low economic activity put pressures. Firms are unable to sustain in that economic pressure and they start laying off the employees. Okay, unemployment is a counter cyclic means it rises when economic growth is low and vice versa. What do you understand by this term? Okay, guys, आपको ये चीज समझ आई है अभी तक जो मैंने बताई है? Okay, 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 sure. So should I continue? Yes, sir. Okay. Okay, you may ask me any question at the end as well equally. Okay. Okay, I was just telling you about the unemployment is a counter cyclic means. It rises when the economic growth is low. Means it says that unemployment is a counter cyclic means it occurs in the counter cycle when your economic growth is low, unemployment increases, and when economic growth is high, employment increases because economic growth provide opportunity to the citizens of any state to work for their state and to promote their economic growth. So more people participate in more people participate when the economic growth is at its the highest ebb. Okay, sure. Okay, as I already discussed about how poor economic growth rate impacts and how it causes loss to the labor market. मतलब ये बताता है हमें कि किस तरह से ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलके और फोर्स करते हैं आपके जो ह्यूमन कैपिटल है उसको कि वो पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से जो है वो डेवलप कंट्रीज की तरफ जाए. उसकी ये रीजंस हैं, मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग और ये एक दो दिन में नहीं होती. इट टेक इयर्स टू डेवलप एंड ओवर द इयर्स these conditions develops and people start losing their trust in the institutions and leave that country. Okay, so here we will discuss about human capital flight occurs when financial leaves a country due to the political and economic turmoil. Okay, so you might have you might have come across from the news that I already told that more than 800 firms have stopped working in Pakistan. So उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये होगा कि जो लोग हैं जो कि कैपेबल हैं काम करने के, मार्केट फोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेबर मार्केट में आना चाहते हैं, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो सोशल सेक्टर है, एजुकेशनल सेक्टर है, when they will not get an opportunity तो वो कंट्री छोड़ जाएंगे, they will leave the country. As we have seen last year 14.6 as we have seen last year 1.4 million people left the country because they are not able to find their desired jobs or workplaces. Okay, so it will lead to the low human capital flight also is responsible because of the low living standard, lack of opportunities, political chaos and attraction of developed countries. All these factors combine together and force the people to leave country. Okay, so इसका नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा इसका नुकसान ये होता है कि जो आपके हाई ब्रेन्स होते हैं आप उनको लूज कर देते हैं, जो कि स्टेट के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप उनको लूज करते हैं. ह्यूमन कैपिटल लॉस होता है. आपका रेवेन्यू लॉस का मतलब सिर्फ ये लॉस नहीं होता जो फाइनेंशियल लॉस होता है. रेवेन्यू लॉस आपका ह्यूमन कैपिटल रेवेन्यू लॉस भी होता है और आपका सोशल कैपिटल रेवेन्यू लॉस भी होता है. ये these are all kind of revenues and collectively contribute to as the human capital. Okay, so we will swiftly move toward the unemployment and nation building in Pakistan.
So here I have given some statistics of Pakistan Economic Survey 2023 and 2024. So it states that almost 4.5 people between age 15 and 24 are unemployed in Pakistan, considered as one of the highest unemployment rate globally. Okay, and among highest, not highest, among one of the highest and developing countries as well. So here here's the difference. एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो फीमेल पार्टिसिपेंट हैं जो कि स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं उनमें 14.4% है, जबकि जो मेल सिटीजन्स हैं और मेल जो वर्क फोर्स है उसमें 10% है. Okay, so unemployment, you can see how it's a chain and why when it's disrupted, how it impacts our nation building process, and specifically as a case study in Pakistan. Okay, so workforce is, because of unemployment, workforce is discouraged, and low productivity and unemployment are the major obstacles which are hunting Pakistan's goal to reach upper middle class countries by 2047. A few years back, Pakistan built and Pakistan decided that Pakistan will reach to upper middle class income countries by 2047. बट जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल टर्मोइल है, इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इस कंडीशन में आप खुद असेस कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान 2047 तक अपनी 100वीं सालगिरह तक पाकिस्तान अपर मिडिल इनकम कंट्री बन सकेगा या नहीं. तो क्योंकि पाकिस्तान आज भी जो है वही मसाइल फेस कर रहा है जो पिछले 75 साल से थे, तो मतलब इन मसाइल का हल जरूरी है, तभी पाकिस्तान जो है वो नेशन बिल्डिंग की तरफ आ सकेगा. ओके, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ रीजंस दैट व्हाई नेशन बिल्डिंग इज फेलिंग इन पाकिस्तान. सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये इस चीज का जवाब पता होना चाहिए कि नेशन बिल्डिंग क्यों जरूरी है. एक स्टेट के लिए नेशन बिल्डिंग क्या काम करती है, ठीक है, एक स्टेट के लिए नेशन बिल्डिंग का क्या रोल है. तो नेशन बिल्डिंग से मुराद ये है कि आपकी जो सोसाइटी है उसमें कोहेरेंस होती है, बायसनेस नहीं होती, उसमें जो आपके सिटीजन्स होते हैं दे हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू लिव देयर लाइव्स. And once they are unable to get it, nation building process fails miserably. Okay, in case of Pakistan, as you can see that chronic incompetences, malaise and widespread institutional dysfunction has plunged Pakistan into series of intervened existential crises. So here this term states that Pakistan के जो ये इस टाइम पे लिंगिंग इश्यूज हैं नेशन बिल्डिंग के, ये जो है वो ये ईयर्स लॉन्ग और डिकेड्स लॉन्ग जो पाकिस्तान की फेलियर ऑफ पॉलिसीज हैं ये उसकी वजह से हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान इस टाइम पे पाकिस्तान इज एट द क्रॉसरोड ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. ओके, सो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि पुअर डेमोक्रेटिक एंड गवर्नेंस सिस्टम है. ओवर द इयर्स पाकिस्तान में गवर्नेंस सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर सका जैसा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में हुआ, इंडिया में हुआ, बांग्लादेश में हुआ. तो कि बांग्लादेश में इस टाइम पे भी एक बहुत लंबा टेन्योर जो है वो अथॉरिटेरियन रेजिम कर रहा है, ठीक है. बट इसमें अगर आप प्रिसाइजली एक बेटर कंपैरेटिव एग्जांपल दी जा सके तो वो उसमें इंडिया की है, जिसमें इंडिया ने फाइनेंशियल रिफॉर्म, गवर्नेंस रिफॉर्म्स और जो है वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के थ्रू अपनी जो नेशन बिल्डिंग है उसको किया है, और इस टाइम पे इंडिया इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली. Okay, so the decisions which they took in 1915 and 1950s and 1960s is benefiting them in the contemporary years. Okay, so another reason of nation building, failure of nation building in Pakistan is poor democratic and governance system, establishment versus elected political elites. Establishment and elected political elites are most of the time are not on the same page, and because of that our democratic process fails repeatedly.
And since 1988, Pakistan is under. Okay, is this question? Yes, please. Does anyone want to ask any question? I think no sir, आप continue करें. Okay, sir. Okay, somebody raised the hand, so I thought that they want to ask any question. Okay, okay. Okay, आप continue करें. Okay, so here are the some reasons that why Pakistan's nation building process is failing. So we need to converge our political and non-political elite on the same page, so that we can have a political coherence among our institutions and among our political and economic actors. Okay, so another reason of our nation building failure is that our political parties prioritized and supported the current country's economy through the stunted growth. What do I mean by the stunted growth? Stunted growth is that you don't fix the problem, but you just take some remedies and to fix the problem for short run. तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान लॉन्ग रन में ये होता है कि जो आपका कंट्री है वो उसकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करती है, या वो फॉरेन एड्स पे, फॉरेन रेमिटेंसेस पे एक्सटेंसिवली रिलाई करना स्टार्ट कर देती है. जिस टाइम पे भी आपकी इकोनॉमी किसी एक चीज पे रिलाई करती है तो उसका नुकसान ये होता है कि जो है वो आप उस चीज पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं. अगर देखें, सऊदी अरेबिया जो है वो इस टाइम पे अपनी इकोनॉमी पेट्रोल से और इससे शिफ्ट कर रहा है इंडस्ट्री की तरफ और प्लस टूरिज्म की तरफ. सो दे हैव टेकन दिस डिसीजन वेरी actively and very they have taken this decision very efficiently to diverge their economy from petro industry to the other industries, so that they can have a sufficient revenue to run their state. But in the case of Pakistan, the major loss has been contributed by PMLN because they have initiated many debt-led financial models, which resulted in the fiscal deficit each year. उसमें क्या होता रहा है? उसमें ये होता रहा कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वो बिल्कुल ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया. रीजन उसकी ये थी कि जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है वो मोस्टली वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करती थी जो कि कर्जा लेके किया जाता था. तो जब भी आप कर्जा लेके करते हैं तो आपकी इकोनॉमी का साइज उतना होता नहीं है, और आप जो कर्जा वो है वो ज्यादा ले लेते हैं, तो फिर आपकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करना शुरू करती है. बट उससे पहले आपका पॉलिटिकल कोलैप्स स्टार्ट होता है. ठीक है, क्योंकि जो पीपल हैं उनके दरमियान रिजेंटमेंट आना शुरू हो जाती है. ठीक है, अमंग द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. सो देयर इज नो कोहेरेंस बिटवीन पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. सो वी शुड वर्क ऑन इट and follow that model that should be precisely related to economic and political development collectively. Okay, so here is some policy input that I believe that it's because of political vacuum that must be addressed on immediate basis. We don't have any political elite that we see that can address our problems. Reason is that political framework is not grown over the years. Because of this Yaz martial law, I believe that student politics was banned, and we could not have some credible people who can think about our state, our nation, and our citizens. So in this scenario, it is very unrealistic to expect that this class of political leaders, mostly manufactured or nurtured by the establishment since 1988, can steer Pakistan out of the present quagmire. They will continue to stunting. They will continue to progress by stunting their economy, state economy, and resultantly, you will see that in any shock, Pakistan's economy will suffer. Okay, so we need to avoid this stunted economic growth. We should work on the factual basis. Plus, we should work on the terms, on such terms and conditions which are not based on this stunted growth.
we should look for the tangible growth instead of just the statistical or for the sake of just political stunting. Okay, absence of reform would result in dysfunctional or semi-authoritarian state. As you have seen that Pakistan is failing democratically, politically, and economically. So authoritarian regimes are more common in Pakistan because of this political and economic failure. So as far as this condition will continue, it will further perpetuate in Pakistan's political and economic framework. Okay, guys, do you have any question? Thank you for your time. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस डिटेल एक्सप्लेनेशन। पार्टिसिपेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मैसेज में कर सकते हैं या आप हैंड रेस करें तो मैं आपको अलो करूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। सर हमें चैट में मैसेजेस हैं। Yes, yes. You may write questions or you may ask vocally. I would try to answer all the questions asked or posed to me. Okay, how does population growth affect unemployment in Pakistan? Yes, very good question. Okay. Is there anyone who wants to ask? I just want to club the questions. Okay. So first of all, I will answer the question raised by Aksa Bashir. How does population growth affect unemployment in Pakistan? Yes, you raised one of the. Actually, I could not cover all the aspects of unemployment in this short short meeting or session. Yes, population. Pakistan should make a policy that should be based on controlling the population. Yes, but actually, if you see that, I will give you an example of China. They have a huge population. Okay, more than 1.5 billion population. China and India, but they have manipulated their population into very positively and involved them into the industry and country's development. Population sometimes it's if it is misused, so it can be havoc for state. जैसा कि पाकिस्तान के केस में है कि वो अजाब बन जाती है, लेकिन अगर आप इसको चाइना की ग्रोथ रेट से कंपेयर करें, आप इसको जो है वो बांग्लादेश की ग्रोथ रेट से कंपेयर करें और जो आप इसको इंडिया की ग्रोथ रेट से कंपेयर करें, तो इंडिया खुद अभी स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिक लेवल्स पे, लेकिन बट अभी उन्होंने काफी सारा जो है वो अपलिफ्ट किया अपने जो सिटीजन्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. यू कैन सी द चाइना इज डूइंग सिंस 1990s. सो उन्होंने इसको एसेट बनाया है. जब तक आप पॉपुलेशन को एसेट नहीं बनाते तो तब तक फिर वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट और नेशन बिल्डिंग जो है ना वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, वो फेल ही रहता है. तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अगर देखा जाए तो इन कंट्रीज के मुकाबले में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है, ठीक है. नो डाउट कि चाइना ने भी चाइना ने बहुत सारी जो प्रोग्रेस की है वो वन चाइल्ड पॉलिसी के थ्रू की है. मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए उन्होंने जो है वो पाबंदी लगाई थी. तो इस तरह की जो पॉपुलेशन कंट्रोल है डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट इशू. बट इमीडिएटली ये क्या किया जा सकता है कि इमीडिएटली ये किया जा सकता है कि जो आपके पास एक्सिस्टिंग रिसोर्स है उसको यूटिलाइज किस तरह करें. आई होप आई एड्रेस your question. Okay, the next question is how can infrastructure development support nation building? तो मुबशर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो आपको पता है कि फर्दर एवेन्यूज अगर फर्दर एवेन्यूज ऑफ ट्रेड ओपन होते हैं, आपकी इंडस्ट्री डेवलप होती है, आपका जो क्या कहते होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस है वो मैनेज होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ये होता है कि आपकी जो लेबर फोर्स होती है उसके लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, उनको जॉब्स मिलती हैं. नॉट ओनली जॉब्स, एक्चुअली इट्स साइक्लिक प्रोसेस. जब भी किसी भी स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो उसमें इंजीनियरिंग वाले भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें सोशल सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है, उसमें पॉलिटिकल एक फुल फ्लैज इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि पाकिस्तान के केस में मिसिंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज की हद तक है और मतलब उससे ज्यादा जो है वो ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए. ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये भी तब होगा जिस टाइम पे आपके पास फाइनेंस होंगे, आपके पास ह्यूमन कैपिटल होगा. आप ह्यूमन कैपिटल लॉस करेंगे होगा तो फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
नहीं होगा, फिर आपका नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो या तो स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा, दोनों में से एक ही चीज होगी। ओके ओके ओके, हाउ कैन एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट नेशन बिल्डिंग एंड रिड्यूस? Yes, a very important question. Okay, so actually, our government should take initiative in supporting entrepreneurship, and I would say that government should actively, instead of giving loans to the people, government should have supported people who are willing to actively contribute on the and small and medium scale enterprises. I would state that small and medium scale enterprises can address Pakistan's unemployment issue at low to mid level, because it will generate economic activity in the regions where people are facing difficulties or don't have employment opportunities. So once this cycle will be established, then we will have enough to provide to the state and to the rest of the world. Okay. Okay, next question is, isn't it that the politics is exclusive for idiot and the people from grassroots level are not allowed to enter in a mainstream politics whether there is a political hegemony of some dynasties? Isn't the reason of political polarization? Yes, Asif, you raised a very important question, and actually political polarization exclusively, it has been done very smartly to keep people out of the political mainstream politics, so that their desirable electables can be kept for long run. And you have seen that in all political parties, in election campaigns, it revolves around the electables. Electables are those people which are regularly elected on from their constituencies. So वडेराज और जितने भी ये हैं लैंडलॉर्ड्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सारी पॉलिटिकल एलीट है। जब ये तब तक जो है वो एक कॉमन बंदा इलेक्शन में या इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा जब तक एक आपका एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क नहीं होगा। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में आपको स्पेस मिलेगी, जो अथॉरिटेरियन रजीम है उसमें तो आपको किसी किस्म की कोई भी स्पेस नहीं मिलेगी। तो जो पॉलिटिकल हेजमनी है वो सम डायनेस्टीज की वो थ्रू ऑफिशियल चैनल भी सपोर्ट होती हैं और अनऑफिशियल चैनल्स भी सपोर्ट होती हैं। तो फिर इसमें डेफिनेटली पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज होती है और उनको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट का होता है, लोगों से उनको कोई कंसर्न नहीं होता। Okay, what role do government policies play in addressing unemployment and nation building? Okay, are you guys asking in Pakistan's context or overall? Okay, Mubashir, are you asking in Pakistan's context or in overall? It is overall, sir. Okay. The role of government policies play in addressing unemployment and nation building. Yes, governments initiate various governments takes various initiatives depending upon their budget allocation and depending upon their circumstances. Okay, they develop industries, and not only industries, they actually they actually put people into the right place. Sorry, let me explain it. Government policies play in addressing unemployment. So government start initiatives like vocational training programs, as Pakistan is already conducting, but I believe that they are insufficient. They believe they improve the skill set of their state citizens. As you can see that the more qualified labor is in those states which are following the high standards, like in the western states or some Southeast Asian states. Okay, so it's all depend upon the innovation and government strategies to reduce the unemployment, and it further forces the state to go for the nation building process. Okay. How can we effectively address unemployment as means to promote sustainable nation building, especially in regions with high youth populations? Okay, how can we effectively address
Okay, first of all, in high population countries, uh, it uh, it is very necessary that government takes such initiatives which are supportive to their state. Like you have seen that government is not utilizing its population as an asset. Okay, and once it utilizes as an asset, so progress you may see in the China, they have utilized their huge population as an asset because they prioritize their state, they prioritize their industrial base, and specifically they develop trade linkages, they develop their industrial base, and they develop their infrastructure. And over the years, so it's not just a few days scenario. You have to work for decades to gain the all benefits that you guys are looking in developed countries. Okay, so unemployment as a means to promote sustainable nation building. Sustainable nation building won't be possible without developing the political framework, without developing democratic framework, or if if it some kind of illiberal regimes. There are more than almost 40% states in which there are illiberal regimes, but the regime that is struggling within self, like the struggle between the democratic and authoritarian regime. So you can only get the benefits when it's decided one kind of regime. So we have struggled for more than 7 decades for democratic development. So Pakistan is still a struggling democracy. So you can say that how we can have a sustainable nation building in the absence of weak political and democratic system. Okay. How can nation building initiative help reducing unemployment? Okay. How can nation building initiative help reducing? Okay, as I already have discussed that nation building initiative provide opportunities to youth that mostly suffer from unemployment. So it provides them opportunity for growth, for contribution to the development of nation. Plus, it leads to the nation building. What do you see? How do you see the nation building? Nation building is basically one nation. Okay, in which there is a less class difference or there is no class difference. No class difference is a tokenism. There will be class difference in every state. There are lot different class differences, but the working population gets their right. Okay, so in case of Pakistan, a working population don't have sufficient right. Instead, it is more captured by the elites or more captured by the political elite, economic elite, and non-democratic elites. Okay, how nation building initiative can reduce the. Okay, next question is, what role do government policies plays in addressing unemployment and nation building? I think this question has already been addressed. The first question was asked by Mubashir Yassin. Okay, okay, so how we can see the future of farms or industries. Okay, so here's a question asked by Asaf Ali. How we can see the future of farms industries in Pakistan? That should be the main question of this debate. Uh, we need to have provide such an environment that is conducive for farms. देखें, जब आपकी फर्म्स जो हैं आप उनके ऊपर हाई टैक्सेशन करेंगे, ट्रेड आपकी होगी नहीं रीजनल कंट्रीज के साथ, आपकी इंपोर्ट बेस जो है वो ज्यादा है, जो आपकी एक्सपोर्ट बेस है वो है नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि आपकी इंडस्ट्रीज किस फ्लरिश करेंगी। प्लस इंडस्ट्रीज फ्लरिश करने का जो है वो तब करेंगी जिस टाइम पे आप अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं, फॉर्म्स हैं, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आएंगे। एट द मोमेंट आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो मतलब एक लोअर लेवल पे हैं एज कम्पेयर टू द रीजनल कॉम्पिटिटर्स। लाइक इंडियन जो इंडस्ट्री है वो आप टेक्नोलॉजिकली देखें कितनी एडवांस है। मैं इन दो कंट्रीज की आपको इस वजह से एग्जांपल देता हूँ,
इन रीजन, क्योंकि साउथ एशिया में ये जो कंट्रीज हैं ये 6+ की ग्रोथ रेट पे हैं। तो जो ग्रोथ रेट होता है वो इंडिकेटर होता है मेजर आपकी जो स्टेट की डेवलपमेंट होती है। ठीक है सर, हाउ वी कैन सी द फ्यूचर फॉर्म्स ऑफ ओके इन पाकिस्तान इफ वी वांट दैट कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि फर्म जो कि फर्म्स के लिए सपोर्टिव और फ्रेंडली हो। अब पाकिस्तान में क्या मसला है, पाकिस्तान में पोल्स हैं, कार्टल्स हैं बने हुए फर्म्स के दरमियान, उनकी मोनोपोली है। दे डोंट अलाउ द अदर पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जो मोनोपोली बनी होती है वही फर्म्स जो हैं वो मैनिपुलेट करती हैं आपका पॉलिटिकल सिस्टम को, आपके इकोनॉमिक सिस्टम को। ठीक है, वही आपके जो क्या कहते होते हैं इलेक्टेबल्स होते हैं उनको सपोर्ट करती हैं। लाइक यू कैन सी दैट ये जो शुगर माफिया है पाकिस्तान में जंगी तरीन ग्रुप है। ठीक है, इस तरह से आपका जो इंडस्ट्रियल ग्रुप है इत्तेफाक फाउंड्री है। ठीक है, ये सारे जो हैं वो एलीट हैं, जो कि पॉलिटिकल एलीट हैं, इकोनॉमिक एलीट हैं। लेकिन जिस टाइम पे मार्केट में कंपटीशन होगा, न्यू जो है वो क्या कहते होते हैं फर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे मार्केट में, तो तब जाके जो है वो क्या कहते होते हैं आप एक अच्छा कंपटीशन करेंगे और वो पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रीज है उसके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। और ये तब होगा जिस टाइम पे आपके कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। जो इन्वेस्टर होगा उसे ये आइडिया होगा कि जो मेरा जो कैपिटल है वो जाया नहीं होगा। जो मैं इन्वेस्ट करूंगा, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल में करूं, चाहे वो मैं फिजिकल कैपिटल में करूं, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट की सूरत में करूं, वो वेस्ट नहीं होगा। तब जाके आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो कंट्री है उसमें फर्म्स और इंडस्ट्रीज का जो है फ्यूचर स्ट्रांग होगा। अब आप चाइना की मिसाल देखें, चाइना में जो इंडस्ट्रीज हैं या जो एजुकेशन सेक्टर है वो दे आर इक्वल स्टेक होल्डर इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। सो वाई हम तो के चाइना में जो है वो डेमोक्रेटिक रिजीम नहीं है, बट उन्होंने डेमोक्रेटिक रिजीम ना होने के बावजूद भी अपनी जो स्टेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है। उनको ऑन बोर्ड लेके तो उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ओके, हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज पॉवर्टी। ओके, एंड आपकी जो क्या कहते होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज होती है। तो जब पॉवर्टी इंक्रीज होती है तो उसके साथ बहुत सारे मसाइल आते हैं, लाइक आपका सोशल इनजस्टिस होता है। ठीक है, इनकम इनक्वालिटी होती है। ठीक है, लोग जो हैं वो क्या कहते होते हैं क्राइम्स की तरफ जाते हैं, लॉलेसनेस की तरफ जाते हैं, तो जो आपकी नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। ओके, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन नेशंस डेवलपमेंट। तो जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं उसमें तो यही होता है कि आपका जो कैपिटल फ्लाइट होती है वो होती है, लोग छोड़ जाते हैं कंट्री। जैसा अभी पाकिस्तान में हो रहा है कि हर साल तकरीबन 14 से 15 लाख आपका ह्यूमन कैपिटल जो है वो दूसरे कंट्रीज में जा रहा है, तो कैपिटल डेफिसिट होता है। ठीक है, प्लस आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसकी वजह से आपकी ग्रोथ रेट रुक जाती है, आपकी जो इंडस्ट्री है वो फ्लॉप हो जाती है, वो आपकी इंडस्ट्री वर्क नहीं करती, जो आपकी नेशनल डेवलपमेंट है वो क्या कहते होते हैं सबमर्ज हो जाती है किसी और चीज में। ठीक है, तो जो है ना ये चीजें हैं जिसकी वजह से आपको जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होती है वो पॉलिटिकल क्यास की सूरत में आती है, प्लस आपकी सिविल वार की सूरत में भी आ सकती है, इंसर्जेंसी की सूरत में आती है। जैसे अभी बलूचिस्तान में चल रहा है, वहां पे काफी ज्यादा जो है वो क्लास डिफरेंस है। ठीक है, जिसकी वजह से पीपल हैव एन स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान और सॉरी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस। तो वो उसकी यही मेन रीजन है कि वो दे आर सफरिंग फ्रॉम मैनी इयर्स, सो इट perpetuate in your system and it collapse your entire system. What strategies can government use to reduce unemployment to support nation building? Okay, गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले तो ये है कि जो आपकी यूथ है इसको देखे कि वो किस तरह से जो है वो यूज कर सकती है इफेक्टिवली। ठीक है, तो जिस टाइम पे जो है वो स्टेट की प्रायोरिटी होगी यूथ अदर फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्टिव्स, उस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है ना गवर्नमेंट विल रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट टू सपोर्ट द नेशन बिल्डिंग। उसमें यह है कि जो टेंजिबल बेनिफिट्स हैं वो तब मिलेंगे जिस सबसे पहली चीज तो यह है कि करप्शन खत्म करनी है। ठीक है, लॉलेसनेस को खत्म करना है, आपका पॉलिटिकल फ्रेमवर्क स्ट्रांग होगा, नेपोटिज्म को खत्म करना है। ठीक है, तो फिर ये जो है वो सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट।
Okay, is there any question? Is it sufficient to collaborate with corporations, to stable economy and enhance chances of employment? Is it sufficient to collaborate with corporation? अच्छा, जो डेवलप स्टेट्स होती है ना, उसमें क्या कहते होते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट फर्म्स और नॉन गवर्नमेंट फर्म्स होती हैं, वो इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द nation development and providing economic opportunities to their employees. Okay, so is it sufficient to collaborate with corporations to stable economy and enhance chances of employment? I would say that ये तो sufficient इतना नहीं, ये sufficient होगा in that chances के अगर आपकी जो है वो जो आपका जो प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो आपका ठीक हो, ये तब आपका जो है वो अभी तो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट जो सेक्टर है वो खुद स्ट्रगल कर रहा है, उनका सर्वाइवल जो है वो थ्रेटन है। तो जब तक उनको अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं खत्म होगा तो वो किस तरह से आपकी इकोनॉमी को जो है इम्प्रूव कर सकेंगे। दे आर लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज, उनको सैलरीज नहीं दे रहे, लो वेज रेट पे रख रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस कंडीशन में तो फिर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो फुली कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द नेशन डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। सो ये सारा पूरा चेन फंक्शन है जो कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से ऑपरेट होता है। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। इज देयर एनी क्वेश्चन? पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें, नहीं तो हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक हमारे पास और कोई क्वेश्चंस नहीं है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वाज सो नाइस ऑफ यू टू हैव यू ऑन बोर्ड। Thank you so much. Thank you so much, everyone. I hope this will enlighten you and would force you to study about nation building and unemployment. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, participants. Hopefully, we will meet in next session. Okay. Allah Nice Hafiz. to see you guys. Allah Hafiz.